Hello, my dear children. Welcome to Science and Technology, a book by Galaxy Publication for class 6th. Children, let's begin with chapter number 10, that is light. Have a look on overview. We see so many objects around us, colorful and different. On the way to school, we see things like buses, cars, cycle, trees, animals and sometimes flowers. How do you think we see all these objects? Think of the same places at night time if were completely dark. What will you see? Suppose you go inside a completely dark room. Are you able to see any objects in the room? But when you light a candle or a torch, you can see the objects present in the room, isn't it? Without light, things cannot be seen. Light helps us to see objects. The torch bulb is object that gives out light of its own. Sun is another familiar object that gives light of its own. Objects like sun that gives or emit light of their own are called as luminous objects. What about objects like chair, a painting or a shoe? We see these when the light from luminous object, that is sun or a torch or an electric light, falls on these and then travel towards our eyes. तो जो sun है, sun is a luminous object और वही चेयर है, टेबल है, ये सब कैसे है? ये सब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स है बिकॉज दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट. In ancient time, man discovered how to make fire. The only useful source of light were the sun and the moon. Fire was sometimes caused by lightning striking forest trees, by intense solar heat igniting dry vegetations, and by hot lava from volcanoes. Early man made fire by striking flints on iron stone. So fire not only provided a source of illumination which could be controlled but was also a means of keeping away wild animals. Light has been an important and useful component of our environment. It is a form of energy. Life itself cannot be seen, but it enables us to see things. Light is essential for our life. We depend directly or indirectly on plants for our food, and plants prepare food in the presence of sunlight. This food is used by animals and plants for their growth. Also, we get oxygen, food and fuel from plants. Had there been no sunlight, we would have not got all these things from plants. Thus, we depend on light for food, oxygen, fuel and energy. Now, चिल्ड्रन, लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. लाइट हमें कहाँ से मिल रही है? हमें सन से लाइट मिल रही है. सन इज अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और इसी लाइट एनर्जी को प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं टू मैन्युफैक्चर देयर फूड. और जो वो फूड बनाते हैं किस प्रोसेस से बनाते हैं? यस, फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं. और फोटोसिंथेसिस में निकलता है एज अ बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन, विच इज वेरी वाइटल गैस फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. उसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते. और फिर हम लोग एक्सेल आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको प्लांट्स वापस से सनलाइट की प्रेजेंस में यूज करके क्या बनाते हैं? खाना बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. एंड दिस साइकिल कंटिन्यूज. सिमिलरली लाइट हमें किस लिए चाहिए? हमें ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए भी चाहिए. अगर लाइट नहीं होगी तो हम किसी चीज को देख नहीं पाएंगे. हम किसी भी चीज को तभी देख सकते हैं जब वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में आती है. अगर वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होके, उस ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में ना पड़े तो हमें कोई चीज दिखाई नहीं देगी. इसीलिए अगर हमें कोई बिल्कुल अंधेरे कमरे में छोड़ दिया जाए तो हम कभी सोफे से टकराएंगे, कभी टेबल से टकराएंगे, तो वी विल नॉट बी एबल टू रीच अप टू द डोर बिकॉज वहां पे लाइट का सोर्स नहीं है, वहां से कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा जिसकी वजह से हमें चीजें दिखाई दे. बट वहीं अगर हम एक टॉर्च की लाइट जलाते हैं या फिर हम वहां पे इलेक्ट्रिक बल्ब को स्विच ऑन करते हैं तो वी आर एबल टू सी ऑल द ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि वहां से फिर ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज में आएगी. लेट्स बिगिन. गिवन बिलो आर द पिक्चर ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स. पुट अ टिक इफ इट इज अ लुमिनस ऑब्जेक्ट एंड अ क्रॉस इफ इट इज अ नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट. ट्यूब लाइट, सो इट इज अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. बुक नॉन ल्यूमिनस है. ऐसे ही बाकी के पार्ट्स आप अपने आप से अपनी नोटबुक में करेंगे. Light. If we enter a dark room, the objects present in the room are not visible. हमें क्यों नहीं दिखेंगे? क्योंकि वहां पे सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, वहां से कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा जिसकी वजह से हमें चीजें नहीं दिखाई देंगी.
However, if we switch on a bulb, everything in the room becomes visible. Now the light is being reflected from the object and therefore we are able to see each and everything. So children, as we have already discussed, light is a form of energy. When this energy falls on objects in the room, it bounces off from the surface of the object, यानी कि वो reflect back होती है. और when this energy enters our eyes, जब ये हमारी आंखों में enter करती है, तभी हम किसी चीज को देख पाते हैं. It is finally the brain which really sees the object. Eyes are the only aids in seeing the objects around us. So we can say light is a form of energy that help us to see things around us. So children, light makes things visible. We have already discussed कि जब तक लाइट रिफ्लेक्ट बैक नहीं होके हमारी आईज में एंटर करेगी, हमारा ब्रेन उसको इंटरप्रेट नहीं करेगा, तब तक हम किसी चीज को देख नहीं सकते हैं. Luminous and non-luminous body. The bodies or the objects which have their own light and they emit their own light are called as luminous objects. जैसे कि हमारा sun. Sun gives out its own light. Therefore, it is a luminous object. Electric bulb, tube light, ये सारे luminous objects हैं. And the objects which do not emit their own light are called as non-luminous objects like wood, cupboard, chair, table, book, etc. Even our planets are non-luminous क्योंकि उनके पास अपनी लाइट नहीं होती है. Even moon is non-luminous object children. But आप कहोगे moon तो शाइन करता है रात में. तो yes, it shines by the reflection of light from the sun. वो sun की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है जिसकी वजह से वो हमें शाइनिंग दिखाई देता है रात को. You know that sun, the stars, candle and a lamp etc. give us light. Such bodies which give out light of their own are called as luminous body. Most of the objects around us do not give light themselves but become visible when light from luminous body fall on them and some part of it reflected light enters to our eyes. Such bodies which do not give out their own light are known as non-luminous bodies. Most objects in the world are non-luminous. Moon is also a non-luminous body as it does not have its own light. So, moon की भी बच्चों अपनी लाइट नहीं होती है, वो भी लाइट रिफ्लेक्ट करता है जो सनलाइट उस पर फॉल करती है. Activity 1. Prepare a list of 5 luminous and 5 non-luminous objects which you observe in your daily life. This page too is illuminated most probably by sunlight. You are able to read the page because the light falling on it reflects back and reaches your eyes. We cannot see things in the absence of light. तो बच्चों हम absence of light में जब light नहीं present होगी तो हम कुछ भी नहीं देख सकते. Light is a form of energy. Have you tried to catch light? Light जो है बच्चों ना तो ये solid है, ना ये liquid है और ना ही ये gas है. It is a form of energy. इसे हम पकड़ नहीं सकते. It does not has mass or volume. It is a form of energy. Light generated by any source has energy, but the amount varies. Sunlight has huge amount of energy whereas light generated by bulb or a candle has much less energy. आपने देखा है कि सन अर्थ से कितनी दूर है, इतने डिस्टेंस पर होने के बावजूद हमें सन की कितनी हीट महसूस होती है इन द समर्स. लेकिन वहीं अगर हम एक कैंडल को लाइट करते हैं, दो इट इज अगेन अ लुमिनस सोर्स ऑफ एनर्जी, बट फिर भी वो उतनी एनर्जी नहीं दे सकती जितनी कि हमें सन से मिलती है. The energy generated by sun reaches the earth in the form of light and heat. Energy from sunlight is mainly responsible for life on earth. तो sun मैंने जैसे आपसे बात करी थी, it is the main source of energy on earth. Plants sunlight को use करते हैं, photosynthesis करते हैं and they prepare the food which is used by all the living organisms to carry out their day-to-day activities. Speed of light. Now children, light travels at a very high speed of around 3 into 10 की power 8 meter per second in air. Light seems to travel across a room the instant a window curtain is pulled, but in fact it sometimes to travel any distance. The speed of light in empty space or vacuum is nearly 300,000 km per second. For all practical purpose, it is taken to be 3 into 10 की power 8 meter per second in vacuum. However, speed of light is different in different medium. जैसे जैसे medium change होता है, वैसे वैसे speed of light भी change होती है. During the early 16th century, the Italian physicist Galileo
devised an experiment to measure the speed of light. Galileo sent an assistant to a distant hill with instruction that the assistant should open the shutter of a lantern when he saw Galileo on other hill opening the shutter of his lantern. Galileo reasoned that because he knew the distance between the hills, he could find the velocity of light by measuring the time between opening his shutter and seeing the light of the second lantern. तो ऐसा कैसे किया उन्होंने? He was knowing the distance. Distance दो हिल्स के बीच का डिस्टेंस उन्हें पता था और उन्होंने उस टाइम को नोट किया जब उन्हें लाइट दिखाई दी. So, by knowing the time and distance, you can easily calculate out speed by knowing the formula of speed. And what is the formula of speed, children? Yes, tell me fast. It is speed is equals to distance upon time. तो उनको distance पता था, time उन्होंने calculate कर लिया था और इन दोनों की वजह से he was able to calculate out the speed. Galileo experiment failed. The velocity of light is so great that he could not measure the short interval of time involved. लेकिन उनका एक्सपेरिमेंट जो था ये फेल हो गया. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लाइट ने बहुत ही कम टाइम के अंदर ही he was able to see the light. तो he was not able to calculate time. वो टाइम को कैलकुलेट ही नहीं कर पाए. इस वजह से he was not able to get out the velocity of light. In 1676, Romer came upon an evidence which proved that light travels at a finite speed. Romer observation indicated that light traveled at a speed of 225,000 km per second. This figure was within 25% of the actual velocity. तो इतनी भी velocity नहीं है. In 1926, the American physicist Albert A. Michelson made one of the first precise measurement of the velocity of light. He measured the speed of light as 2,99,796 km per second. Now it has been experimentally established by many scientists that speed of light is 3 into 10 to the power 8 meter per second in vacuum. Now rectilinear propagation of light. This means that light always travels in a straight line. Rectilinear का मतलब होता है traveling in a straight line. तो लाइट बच्चों हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. अगर आपने सुबह के टाइम में अपने घर में विंडो खोलते हैं तो हम क्या देखते हैं कि सन की रेज जो है हमारे रूम में कैसे आती हैं? इन अ स्ट्रेट लाइन. दैट मीन्स लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. और इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. हम यहाँ पे कैंडल लाइट करेंगे एंड वील टेक अ स्ट्रेट रबर ट्यूब और उसमें से लाइट को देखने की कोशिश करेंगे इस कैंडल की. तो हम क्या देखेंगे? दैट वी आर एबल टू सी द लाइट. और वहीं अगर हमने एक कर्व्ड रबर पाइप लिया और उससे हम अपनी लाइट को देखने की कोशिश करेंगे कैंडल की, तो वी विल नॉट बी एबल टू सी द लाइट. इट इज बिकॉज ऑफ द सेम रीजन कि जो लाइट है इट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट पाथ. In 1966, English scientist Sir Isaac Newton discovered that white light is made up of all colors. Children, white light is actually a combination of 7 colors, जिनको हम विबग्योर भी कहते हैं. जब इन 7 colors को मिला देते हैं तो हमें white light ही मिल जाती है. Newton proposed theory that light consists of tiny particles traveling in straight line through space. He called these particles corpuscles and this theory was known as corpuscular theory. It is very common experiment that if we look at a distance and small source of light through a small piece of rubber pipe or thick paper rolled in the shape of a cylinder, we can clearly see the source of light. The source of light on the bulb or a street, the top of TV tower or a moon at light, we will bend the rubber pipe or the pipe cylinder from the middle cap gently. We will not be able to see the source of light. अगर हमने पाइप को थोड़ा सा भी कर्व कर दिया तो हम सोर्स ऑफ लाइट को नहीं देख पाएंगे. This is because light travels in straight line. While seeing a film in the cinema hall, you may have noticed that light from the projector. कभी आपने जब आप पिक्चर देखने जाते हो, मूवीज देखने जाते हो सिनेमा हॉल में, तो आप क्या देखते हो? स्क्रीन पे तो आपको मूवी दिखाई देती है बच्चों, लेकिन पीछे की तरफ अगर आप देखो तो वहां एक प्रोजेक्टर से लाइट आ रही होती है एंड दैट लाइट इज अगेन ट्रैवलिंग इन द स्ट्रेट पाथ.
What you see is not light itself, but innumerable dust particles in the path of light, which becomes visible when light fall on them. तो लाइट को हम एक्चुअल में नहीं देख रहे, हम क्या देख रहे हैं, हम डस्ट पार्टिकल्स को देख रहे हैं। बच्चों, अगर आपने देखा होगा कि आपके कमरे में जब लाइट आती है, जब सन की रेज आती हैं, दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन उसमें हमें छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स मूव होते हुए दिखाई देते हैं। Let us perform the following activity to see if light actually travels in straight line. You may have seen beam of street light from the lighthouse at an airport. Such lights are used as signals for ships, aeroplanes and to locate animals at night in forests. There are a number of examples which suggest that light travels in straight line. Day and night are caused by traveling of light in straight lines. Now we can do an experiment for this. तो हम क्या करेंगे, हम 3 कार्डबोर्ड्स लेंगे, सेम साइज के लेंगे और उनमें होल बनाएंगे at the same distance. Place them together and make a hole on all the 3 pieces with the sharp object. Now arrange 3 pieces as shown in the figure A. बिल्कुल ऐसे अरेंज करेंगे इनको। Fix the candle at one end and light it. Switch off the light in the room. Observe the candle through the hole opposite to it. Can you see light? बिल्कुल हम यहाँ से लाइट को देख पाएंगे। फिर हम क्या करेंगे बच्चों कि एक पीस को हम रोटेट कर देंगे such that कि उसका होल जो है वो नीचे की तरफ को आ जाएगा and both of the other cardboards have their hole the above side. Turn the first piece upside down and arrange the cardboard pieces as shown. Light the candle. Observe through the hole farthest from the candle. तो हम क्या कर देखेंगे कि हमें लाइट जो है वो विजिबल नहीं है, हमें कैंडल की फ्लेम नहीं दिखाई देगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लाइट के सोर्स को ट्रैवल करने के लिए जगह नहीं मिली, हमने बीच में एक ओपेक ऑब्जेक्ट का यूज कर लिया। Will the number of shadows formed remain unchanged if the number of source of light is increased or decreased? So you are going to discuss this thought with your teacher. This simple experiment proves that light travels in straight line. In situation A, the holes are in line. तो holes कैसे है? Holes सारे ही aligned है, एक ही distance पे present है, इसीलिए light उनमें से easily travel कर पाई। The light from the frame travels through these holes and reach your eye. However, in situation B, holes जो है वो एक लाइन में नहीं है, एक upside down हो गया, तो लाइट को पाथ नहीं मिला because the cardboard is an opaque object. The light from the candle stopped by the first cardboard from traveling further, hence you cannot see it. Light travels in the form of rays. तो लाइट हमेशा जो है बच्चों, it travels in the form of rays. A ray of light is represented by a line with a arrow. तो जिस डायरेक्शन में भी हमारी लाइट ट्रैवल कर रही है, उसी डायरेक्शन में हम अपना एरो को पॉइंट आउट कर देते हैं। The arrow shows the path along which light is traveling. A beam of light is made up of several rays. The rays in a beam of light can be parallel, divergent or convergent. तो beam of rays जो है वो हमेशा straight line में चलेंगी, चाहे वो diverging हो या वो converging हो। Diverging means when the ray of light move away from each other, it is like this. This is the diverging form of light. Just as the light you see in case of torch. And what is converging? When they are coming to a point. तो इसको हम बोलेंगे converging light. So this is convergent and this is divergent. When a beam of light passes through a medium, जब ये किसी मीडियम से ट्रैवल करती है, such as convex lens, तो लेंस कहाँ यूज होती है? So convex lens is used in a magnifying glass. The rays converge and meet at a point. Such a beam of light is known as convergent beam. तो जैसे हमने अभी डायग्राम में देखा था, जब रेस आपस में पास में आ रही होती हैं तो इन्हें हम बोलते हैं convergent beam. When the ray of in a beam of light diverge from each other, मतलब एक दूसरे से दूर जाएंगी, then as in case of concave mirror in torch light, headlights of vehicles, the beam is known as divergent beam. Objects and their shadow. Collect thin sheet of glass, metal, tracing paper or tissue paper, cardboard, etc. Light a candle and place it on a table. Look at the candle flame through the sheet of one by one. Can you see clearly through all of them? क्या हम सभी से साफ तरीके से देख पाएंगे? नहीं. Now let's see क्या होता है.
You will notice you are able to see the candle clearly through sheet of glass. Through cardboard and metallic sheet the candle is not visible. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो glass sheet है वो transparent है. It allow the light to pass through it. लेकिन वहीं अगर हम cardboard की बात करें, metallic sheet की बात करें तो ये कैसे हैं? They are the opaque material. Opaque objects are one which do not allow light to pass through them. This is because when light falls on the object, the light can pass through an object completely as in case of glass sheet. It is reflected by object completely as in case of metallic sheet and cardboard and is absorbed by the object and only a part of it is transmitted by object in case of tissue paper or tracing paper. वहीं जब हमने टिश्यू पेपर से देखा, ट्रेसिंग पेपर से देखा तो हमें कुछ अमाउंट में लाइट दिखाई दी. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये कैसे मटेरियल है? दे आर ट्रांसलूसेंट विच अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम पार्शली. On the basis we can classify material into three categories. सबसे पहले आते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो कि अपने थ्रू लाइट को completely पास होने देते हैं, जैसे कि ग्लास, like air and water. Very small amount of light is absorbed or spread out by transparent objects. A big source of light produces two regions in a shadow. The darker region is called as umbra region और जो लाइटर रीजन होता है उसे हम बोलते हैं पेनम्ब्रा. Then we have translucent material which allow the light to pass through them partially. मतलब सारी की सारी लाइट पास नहीं होती, कुछ अमाउंट में लाइट जो है वो अब्सॉर्ब कर ली जाती है. सो उसे हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट मटीरियल which allow the light to pass through them partially and through which we cannot see clearly. इनसे हम क्लियरली नहीं देख सकते हैं, इसीलिए इन्हें ट्रांसलूसेंट कहा गया है, जैसे कि बटर पेपर, लाइक द फ्रॉस्टेड ग्लास. आवर स्किन एंड ब्लड, grease paper, butter paper, wax paper, ground glass are some of the translucent objects. Then we have opaque object. Opaque objects बच्चों वो होते हैं जो अपने थ्रू लाइट को बिल्कुल भी पास नहीं होने देते, like cardboard, wood. Material which do not allow light to pass through them are called as opaque material. We cannot see through them. When light falls on opaque object, it is either absorbed or reflected by them. For example, wood, coulter, paints, metal sheets, stone, etc. are opaque objects. When is a shadow formed? You must have seen shadows of plants, animals and other objects. If an opaque body is placed in the path of light, तो क्या होता है भाई, अगर हम एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को लेकर आएंगे तो लाइट उसमें से पास हो जाएगी, ट्रांसलूसेंट में से भी पार्शली लाइट पास हो जाएगी. लेकिन जो ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं वो लाइट को पास नहीं होने देते. वो क्या करते हैं? वो ब्लॉक कर देते हैं लाइट का पाथ. इसी वजह से हमें उनकी शैडो दिखाई देती है. Thus rays of light are blocked from going to other side of the opaque body and the space behind the object does not receive any light from the source. The space behind the opaque object where light is wholly or partially cut off by it is called as its shadow. An opaque object casts a dark shadow, a translucent object a weak one, and transparent object forms no shadow at all. Nature and size of the shadow depends upon the source of light. सोर्स ऑफ लाइट का जो साइज है वो कैसा है और कितना डिस्टेंस है बिटवीन सोर्स ऑफ लाइट एंड द ओपेक ऑब्जेक्ट. नाउ एक्लिप्सेस, जिन्हें बच्चों हम ग्रहण भी बोलते हैं, दे आर एक्चुअली द शैडोज. Eclipse are the example of formation of shadows in nature. The earth goes around the sun. You all know that earth is in constant motion around the sun. Similarly, moon is also in constant motion around the earth. तो जो अर्थ है वो मून से कैसी है? बड़ी है, बट सन से छोटी है. द अर्थ एंड मून आर ओपेक नॉन ल्यूमिनस बॉडी, लेकिन सन जो है वो एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है. द अर्थ एंड मून कास्ट देयर शैडो. दीज शैडोज फॉर्म एक्लिप्सेस and there are two type of eclipses, children. One is called as solar eclipse and one is called as lunar eclipse. Now solar eclipse, जिसको हम सूर्य ग्रहण भी कहते हैं, यू नो कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है और मून किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है? अर्थ के अराउंड. जब मून अर्थ और सन के बीच में आ जाता है देन इट कास्ट इज शैडो ऑन अर्थ और इसी को हम बोलते हैं सोलर एक्लिप्स. The earth revolves around the sun and moons revolve around the earth.
solar eclipse occur when moon comes in between sun and earth. तो शैडो ऑफ जो मून की जो शैडो होती है वो फॉल करती है अर्थ पे. सम प्लेसेस लाइक वन ऑन दी अर्थ, यहां पर आप देखोगे यहां पर आपको टोटल शैडो दिखाई देगी. आर इन अम्ब्रल रीजन, मतलब हमें यहाँ पे डार्कर शैडो दिखाई देगी. एंड सम प्लेसेस जैसे कि सेकंड है और थर्ड है, यहाँ पे पार्शली लाइट आएगी, इसीलिए ये वीकर शैडो वाली जोन होगा, इसीलिए इसे हम पेनम्ब्रा रीजन कहेंगे. पीपल इन द अम्ब्रल रीजन सी अ टोटल सोलर एक्लिप्स. तो जितने भी लोग यहाँ पर रह रहे होंगे उनको सन जो है वो बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, इसीलिए यहाँ पे टोटल सोलर एक्लिप्स होगा. एंड द पीपल लिविंग इन द पेनम्ब्रल रीजन, जो लोग यहाँ रह रहे हैं उन्हें सन पार्शली दिखाई देगा, इसीलिए इसे हम बोलेंगे. सो इट विल नॉट बी अ टोटल सोलर एक्लिप्स, बल्कि इसे हम बोलेंगे पार्शियल सोलर एक्लिप्स. When the distance of moon from the earth is such that the tip of the umbra fails to reach the earth, and annual eclipse occurs and sun appear as a ring of light. तो कभी कभी जो आपने देखा है सन कैसा appear करता है, ring of light की, तो उसका रीजन ये है. सोलर एक्लिप्स शुड नेवर बी सीन विद नेकेड आइज. इसे हमें कभी भी नेकेड आई से नहीं देखना चाहिए, एज इट कैन कॉज डैमेज टू आइज. इट शुड बी व्यूड ओनली थ्रू अ स्मोक्ड स्क्रीन और एन एक्सपोज्ड फिल्म. Dark colored glasses can also be used for viewing the solar eclipse. Then we have lunar eclipse. Lunar eclipse बच्चों कब होता है? तब होता है जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाती है. When the earth comes in between sun and the moon, the shadow of the earth falls on the moon and lunar eclipse occurs. और हमें मून जो है वो दिखाई नहीं देता है. Figure shows different positions of moon during the period of eclipse. When the whole of the moon is in umbral region, जब moon umbral region में होगा तो इस area में you will not be able to see the moon. We see total eclipse of the moon, and when the moon is partially in the penumbral region, जब penumbral region में होगा of the shadow, we see partial eclipse. However, when the whole of the moon is in penumbral region of the shadow, the moon is not eclipse at all. Prediction of eclipse. By knowing the movement of sun, earth and moon, we can predict the time and date of an eclipse. But you all know that moon is moving around the earth and as well as earth is moving around the sun. तो हम predict कर सकते हैं कि eclipse कब होगा. Such predictions like when lunar and solar eclipse will occur are found in some books such as Panchang on the almanacs. Activity 3. टू अंडरस्टैंड फॉर्मेशन ऑफ अ शैडो. तो इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे बच्चों. एक कैंडल लेंगे और उसे फिक्स करेंगे फ्लोर पे. नाउ प्लेस एन ऑब्जेक्ट विच इज ऑलमोस्ट एज टॉल एज कैंडल अबाउट 6 to 8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कैंडल एंड लाइट इट. तो 8 सेंटीमीटर दूरी पर हम एक ऐसा ऑब्जेक्ट रखेंगे जिसकी जो हाइट है वो बिल्कुल कैंडल जितनी ही हो. स्विच ऑफ द लाइट एंड मार्क द लेंथ ऑफ द शैडो. नाउ मूव द ऑब्जेक्ट एंड प्लेस इट अबाउट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द लाइटेड कैंडल. मार्क द लेंथ ऑफ द शैडो. तो इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे हमारा ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है उसकी शैडो जो है वो बड़ी होती जा रही है. डज द शैडो चेंज एज यू मूव द ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द कैंडल? सो यू कैन easily see yes. Activity 4. Experimental investigation. How day and night occur. Perform this activity at night. Take a ball and hold it in front of a lighted candle. You will notice that the side of the ball facing the candle is bright, लेकिन जो दूसरी साइड है वो कैसी होगी, वो डार्क होगी, क्योंकि वहां तक लाइट रीच नहीं कर पा रही है. The darkness on the other half of the ball is actually the shadow of the ball itself. What forms an image in a mirror? We all are familiar with a mirror. आप मिरर में अपनी इमेज देखते हो. जब आपको देखना होता है, then you go and see yourself in a mirror. तो मिरर में बच्चों जो हमारी इमेज बन रही है वो कैसी होती है, वो सेम साइज की होती है. क्या आप उसमें छोटे दिखाई देते हो, बड़े दिखाई देते हो या मोटे पतले दिखाई देते हो? नहीं, आप जैसे हो वैसे ही दिखाई देते हो, क्योंकि मिरर जो है वो सेम साइज की इमेज बनाता है. We are all familiar with a mirror. A mirror does not let light pass through it. It is an opaque object. A mirror has smooth polished surface जहाँ से light reflect होती है और हमारी आंखों में enter करती है. फिर हमारा brain इसे interpret करता है and we are able to see our own image.
When a beam of light falls on a polished surface, the ray gets reflected in a regular manner. After reflecting the surface of the moon, the light rays continue to travel parallel to each other. If reflected light continues to travel as parallel rays, then a clear image is formed on the reflecting surface. If the reflection of light is not regular, an image will not be formed. When light falls on a rough surfaces like rough floor, rays do not remain parallel after reflecting, but they are scattered in all directions. That is why rough surface does not form an image. So children, कैसी इमेज बनेगी अगर हमारे पास एक स्मूथ पॉलिश सरफेस है जस्ट लाइक अ मिरर, तो मिरर पे जितनी भी लाइट्स आ रही हैं ये सब पैरेलल है एंड दे विल रिफ्लेक्ट इन द पैरेलल मैनर, तो ये ऐसे ही रिफ्लेक्ट हो जाएंगी. सो हमें एक क्लियर इमेज मिलेगी. लेकिन वहीं अगर हमारा सरफेस रफ है तो रेज जो है दे विल नॉट बी पैरेलल, ये पैरेलली स्ट्राइक नहीं कर पाएंगी. So they will be diversified और हमें एक क्लियर इमेज नहीं मिलेगी. Pinhole camera. A pinhole camera is a simple application of rectilinear propagation of light. तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड बॉक्स लेंगे या हम एक शू बॉक्स भी ले सकते हैं with one end open and the other end covered. Paint it black from inside. Cover the open end of the box with a smooth thin tracing paper using a tape. This acts as a screen. तो इसी स्क्रीन पे आपको अपनी इमेज बनती हुई दिखाई देगी. Make a hole with a pin at the center of the opposite closed side. तो जो उसकी closed side थी वहां पर पिन की सहायता से आप एक होल बनाएंगे. The light will enter the box through this hole. Now you will stand in a dark room and point the hole towards the object outside the window. The object should be in bright light. तो आपने अपने रूम की तो लाइट बंद कर दी है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट आप देखना चाहते हो वो ब्राइट लाइट में प्रेजेंट होना चाहिए. You can see the image of tree or people outside the window on the tracing paper screen. However, the image will be upside down or inverted. तो ऐसा क्यों है, क्योंकि कैमरा में जो इमेज बनती है वो रियल बनती है और इन्वर्टेड बनती है. They will also be diminished in size. तो कैसी इमेज बनी हमारी, 3 characteristics of image which are formed by a pinhole camera क्या है, image will be real, image will be inverted और it will be diminished in size, मतलब छोटे साइज की इमेज हमें मिलेगी. Have a look on InfoBite. If you look closely at the shadow of the tree on the ground, you will see many circular spots of light. These are actually images of the sun. The tiny gap between the leaves act as pinhole camera through which sunlight enter, giving us several images of the sun. A pinhole camera can be used to measure the height of objects like a building or a tree. By measuring the height of image, जो image बन रही है उसकी height को अगर हमने measure कर लिया है, and the distance of image from pinhole, distance of object from pinhole, the height of tree can be calculated. किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, height of tree upon height of its image is equals to distance of tree from pinhole upon distance of image of the tree from pinhole. तो इस मेथड से you can easily find out the height of the tree. इमेज कैसी बनेगी ट्री की, इन्वर्टेड, उल्टी इमेज बनेगी एंड छोटी इमेज बनेगी. A pinhole camera can be used to take the image of the sun. Take care not to look at sun directly as it may harm your eyes permanently. During eclipse, the change in the shape of the sun can be easily studied through a pinhole camera. Remember, the image of sun will be inverted. Now, what is an eclipse? Eclipse is the shadow of one heavenly object on another. Example, when moon comes between sun and earth, its shadow fall on the earth. लेकिन जब अर्थ आ जाता है मून और सन के बीच में, because of this we cannot see the sun completely. We call it a solar eclipse and eclipse lasts for a small time. Activity 5, a pinhole camera. इसमें आप एक pinhole camera बनाएंगे बच्चों. तो आपको क्या चाहिए, you require a cardboard. Cut the box from one of the side and in its place paste a sheet of tracing paper. Make a clear but small hole on the other side as shown. The pinhole box is ready. Face the hole outdoors and you will see an inverted image on the tracing paper. How is image formed and why it is inverted?
Since the hole is very small, a narrow beam of light reflected from the object outdoors is able to pass through the hole. क्योंकि होल आपने बहुत छोटी सी बनाई है, सिर्फ कुछ ही रेज उसमें से पास हो पाएंगी. These light rays continue to travel in a straight line. और ये light rays you all know have a rectilinear propagation and form a inverted image. Even if you hold a plain paper facing an object which is illuminated, the light rays reflected from the object fall on the paper. But since many rays are reflected, they overlap and you are not able to see a clear image. इसीलिए हम पेपर से कैमरा नहीं बना पाएंगे. We have to make it in a form of a box. In a pinhole camera, since only a few light rays are reflected from the object passing through the hole, there is no overlapping and a clear image is formed. पेपर में क्या हो रहा था बच्चों कि जितनी भी रेज पास हो रही थी उन सब की इमेज जो है आपस में ओवरलैप कर रही थी. लेकिन ये ओवरलैपिंग जो है तब नहीं होगी जब when rays are allowed to pass through a small hole. The Worldwide Pinhole Photography Day is celebrated around the world every year on last Sunday of April. This photograph by Emmy Tweedy titled Magnolia Flower was one of the pictures which was a part of exhibition taken by a pinhole camera on 29th April 2007. About 2,947 participants exhibited their photographs. So these were the photographs which were taken through a pinhole camera. Activity 6, to understand inversion. We can use the phenomenon of lateral inversion to send a coded message. Let us write the following sentence using a wet ink pen on a piece of paper. I will do my work honestly. While the writing is wet, put a blotting paper on top of it. The impression of your writing on the blotting paper will be somewhat like this. So, आपको उल्टी इमेज इस सेंटेंस की मिल जाएगी. This is not easily readable. You can use it as a coded message. Of course, when this coded message is seen in a plane mirror, लेकिन अगर आप इसे प्लेन मिरर में देखोगे तो आपको सीधी इमेज दिखाई देगी इसकी. It would be readable without any difficulty. Mirror and reflection of light. When light falls on an object, is passed through the object, get absorbed by the object, get bounced back or reflected by the object, जिसे हम बोलते हैं reflection of light. Silver metal is the best reflector of light rays. Its reflection is 95%. Why do we use a mirror while getting ready? क्योंकि उसमें हम अपनी इमेज देख सकते हैं. The object having polished and shiny surface reflect most of the light falling on them. A plane mirror is a thin, flat and smooth sheet of glass having a shiny coating on one side. This coating is of silver metal and is protected by a layer of red paint. The silver coating makes the mirror shiny on the other side. The shiny surface gives maximum reflection of light. जैसे हमने अभी पढ़ा था कि सिल्वर जो है वो मैक्सिमम रिफ्लेक्शन देता है, इसीलिए हम मिरर के अंदर किसकी पॉलिश करते हैं? सिल्वर, शाइनी सिल्वरी पॉलिश करते हैं ताकि वहां हमें मैक्सिमम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मिल सके. Red paint behind the silvered surface of mirror protects the silver coating. A mirror changes the direction of light. A mirror forms the erect image. तो मिरर में कैसी इमेज बनती है? आप उसमें अपने आप को सीधा ही देखते हो. So image is erect. Have a look on InfoByte. It is because of irregular reflection that we see objects from every direction. Irregular reflection of sunlight by objects around us enable our room to have light during the day, even if sunlight do not directly fall into it. Regular and irregular reflections. So children, here you can see a regular reflection. Regular reflection कब होगा? जब हमारा surface polished होगा और smooth होगा. So the rays will be striking parallelly and they will be bounced back parallelly. So reflection कैसा होगा? Image कैसी होगी? Sharp image बनेगी, clear image बनेगी. वहीं अगर हमारा irregular surface होगा, so rays are coming parallel but they will diverge off. तो वो different directions में जाएंगी जिसकी वजह से हमें sharp image नहीं मिलेगी. The surface of the mirror is very smooth, therefore if the beam of light falls on it, entire beam is reflected in only one direction. This is called regular reflection. However, the surface of most of the objects around us is not so smooth. When rays or beam of light fall on object with uneven surface, they get reflected in different directions. This is called irregular reflection of light. Images and shadows.
We should also know the difference between image formed by a mirror and the shadow, which arise because of the difference in the cause of their formation. A shadow is formed because of the difference in the cause of their formation. A shadow is formed because of obstruction. Shadow कब बनती है बच्चों? जब हमारे सोर्स ऑफ लाइट के पाथ में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है जो कि लाइट के पाथ को ब्लॉक कर देता है. Whereas इमेज इन अ प्लेन मिरर कब बनती है? जब उसका रिफ्लेक्शन होता है. जितनी भी रेज पैरेलली चल रही हैं उन सबका रिफ्लेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से हमें हमारी इमेज मिरर में दिखाई देती है. Periscope. It is an instrument used in submarines which are underwater to view ship above the surface of the water. तो यहाँ पर भी हमें different images मिलती हैं जिसमें हम mirrors लगाते हैं at an angle of 45 degree and we are able to see the above जितने भी वाटर के अबव ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम easily सबमरीन में से देख सकते हैं through a periscope. Then we have a kaleidoscope. Children, it can be used as a toy. A kaleidoscope is a toy used for producing beautiful colored patterns. It is made by taking 3 mirror stripes and joining them to form a triangle. तो इसके अंदर ट्रायंगुलर फॉर्म में हमने मिरर्स को अरेंज किया होता है, उसमें छोटी छोटी हम बीड्स डाल देते हैं, तो जब भी हम उसमें देखेंगे तो हमें अलग अलग इमेजेस दिखाई देंगी. Difference between shadow and an image formed by a plane mirror. The size of shadow can be larger or smaller than that of the object. लेकिन इमेज जो है वो सेम साइज की रहेगी अगर हम मिरर की बात कर रहे हैं तो. Always black is irrespective of the color of the object, shows the details of the color of the object, can be obtained on a screen such as floor or wall, cannot be obtained on a screen, does not show lateral inversion. लेकिन मिरर में जो इमेज है it shows lateral inversion. Now the keywords: luminous, the objects which emit their own light; non-luminous, the objects which do not emit their own light; opaque, a substance through which does not allow light to pass through it; shadow, an area where light is blocked; image usually refers to the impression of object as seen in a plane mirror; translucent object that let light pass through them only partially; and transparent object that let light pass through them freely. Summing up, light is invisible energy which causes the sensation of vision in us. Bodies which emit light are called luminous objects. Light कैसे travel करती है? Light always travels in straight line. It is called rectilinear propagation of light. Opaque objects form shadow and act as obstacle to the propagation of light. There are various sources of light. Natural source हो सकते हैं like sun and the stars, and there could be artificial or man-made source of light like electric bulb, tube lights, candles, oil lamps, etc. A shadow is formed when the path of light is obstructed by some opaque object. The portion of shadow that does not receive any light at all is called umbra, and the portion of shadow receives light partially is called penumbra. Now the exercise portion you are going to do on your own and you are going to get it checked by your teacher. I hope you have understood this chapter nicely, children. Stay tuned for the new video. Till then, goodbye.